Good morning, my dear students. So, welcome to another class of physics. Okay. So, in previous lecture, what we discussed? We discussed about physical quantities and the types of physical quantity, and we get one is fundamental, another one is derived. Fundamental means it's totally independent and derived means it is dependent. Fundamental को हमें कौन कही थिले ना एटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और derived को कही थिले एटा डिपेंडेंट कहा ऊपर डिपेंड करे ना फंडामेंटल क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करे ना नहीं जेटा हमें फंडामेंटल कही थे देयर विल बी देयर 7 स्टार सिस्टम सप्त तारका ना नहीं कौन कही थिले सप्त तारका मास लेंथ टाइम ओके टेम्परेचर amount of substance electric current and luminous intensity. So these are the 7 fundamental quantities, and that 7 fundamental quantity okay can or all the derived physical quantity can be converted into all the fundamental quantities. Okay. So a class रे में कौन पढ़िबा ए क्लास रे में पढ़िबा मेजरमेंट. Okay. A class रे में पढ़िबा मेजरमेंट. What is measurement? Measurement means we can say it is a just comparison. Measurement means it is a comparison of a physical quantity. Okay. It is a comparison of a physical quantity with the same kind of the quantity. Okay. Same homogeneous kind. Okay. It is a comparison of physical quantity with another homogeneous quantity of same kind. Okay. And this is taken as a standard to find out how many times the given standard contain in the physical quantity. Okay. Definition टा बुझा पड़ू नथिबो. देख हम कौन कहूचे मेजरमेंट माने कौन हम गोटे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करिबा. ओके. फिजिकल क्वांटिटी को जतल मेजर करूचे से फिजिकल क्वांटिटी रो गोटे होमोजेनियस सेम काइंड रो क्वांटिटी थिबा दरकार. ओके. बट से सेम क्वांटिटी हमरो स्मॉल हे पारे बा लार्ज हे पारे. ओके. स्मॉल हे पारे सेम काइंड. ओके. माने हम लेंथ मेजर करूचे लेंथ रो हम किलोमीटर को जीवानी डिस्टेंस जो डिस्टेंस मेजर करूचे डिस्टेंस मेजरमेंट आम कहूचे सेम काइंड माने कौन किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर एगुड़ा कहूँ तार डिफरेंट काइंड. ओके. गोटे फिजिकल क्वांटिटी मन कर डिस्टेंस मेजरमेंट आम काइंड कौन कहूचे होमोजेनियस काइंड सेम काइंड माने कौन आम डिस्टेंस को मेजर कर डिफरेंट काइंड कौन ना सेंटीमीटर मेजर कर तार आउ गोटे होमोजेनियस है मीटर मेजर कर आउ गोटे होमोजेनियस है किलोमीटर मेजर कर किंतु क्वेश्चन होची the same kind must be repeated one or more times. Okay, one or more times. So the number of times, how many times the same quantity is repeated in the physical quantity, repeated in the physical quantity. Say quantity ta say physical quantity भितरे से homogeneous quantity टा केते थर repeat अछि. Okay, जो physical quantity को हम measure करूचे तार गोटे सेम काइंड रो यूनिट कंसीडर करिबा और से सेम काइंड रो यूनिट टा से फिजिकल क्वांटिटी भीतर केते थरो रिपीट हेची केते थरो कंटेन करिची सेटा को हमें कहूजे मेजरमेंट. गोटे एग्जांपल नेबी. सपोज वी वांट टू मेजर 1 किलोमीटर. ओके. सपोज वी वांट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी एज डिस्टेंस. ओके. डिस्टेंस रो गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो हम यूनिट कहूजे किलोमीटर. डिस्टेंस यूनिट केते किलोमीटर. ओके. ताले फिजिकल क्वांटिटी नेले डिस्टेंस ताको मेजर करले कोथरे किलोमीटर रे. ओके. जेतले किलोमीटर मेजर करूची ताको गोटे सेम होमोजेनियस क्वांटिटी नेबी. सेम होमोजेनियस क्वांटिटी किलोमीटर रे किए ना मीटर हैला गोटे तार सेम होमोजेनियस क्वांटिटी. ओके. होमोजेनियस तमे या सहित सिमिलर टाइप रो थिबो से क्वांटिटी को मेजर करथो से डिस्टेंस को मेजर करथो सेटा गोटे यूनिट हितवा दरकार. से किलोमीटर जदि नेली तार होमोजेनियस गोटे क्वांटिटी आसला मीटर. ओके. किंतु मोर क्वेश्चन होची गोटे किलोमीटर भितरे केते थर मीटर कंटेन करिछि हाउ मेनी टाइम्स the standard is repeated or contained in that physical quantity. से physical quantity आमे नेले 1 किलोमीटर भितरे मीटर टा केते थर कंटेन करिछि ना तमे कहिलो अकालिए केते ना 1000 थर कंटेन करिछि. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. त माने
1 मीटर 1000 टाइम्स रिपीट हैला परे केते आसुची 1 किलोमीटर जदि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एमि तमे 1000 टाइम्स जीवो ता माने से हे गला केते ना 1 किलोमीटर ओके सो दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड द होमोजेनियस क्वांटिटी m टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी किलोमीटर ओके 1000 टाइम्स रिपीटेड मीटर गिव्स 1 किलोमीटर okay measurement is a comparison of physical quantity we compare here kilometer with meter 1 kilometer is 1000 meter 1000 means it is repeated with homogeneous quantity meter बुझियला ना नहीं मौसा माने आउ गुटे कंसीडर नबा ओके मौसा देखो मानकर आउ गुटे क्वांटिटी नेबी 1 किलोग्राम ओके 1 किलोग्राम जदि आम कनसीडर कहूचे ताले तार होमोजिनियस किलोग्राम रो होमोजिनियस यूनिट आ गुटे कोन आसीबो ना मन कर नेली ग्राम किलोग्राम रो होमोजिनियस यूनिट हैला ग्राम 1 किलोग्राम भितरे ग्राम ता केते थर रिपीट हबो 1000 थर रिपीट हबो तेनु 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम ओके सो मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ओके with another homogeneous quantity homogeneous is here meter gram okay of same kind मैं मीटर किलोमीटर को ग्राम सहित कंपेयर करि परिबिनी ओके मु किलोमीटर को ग्राम सहित किलोमीटर डिस्टेंस ग्राम हैला वेट मास रो ओके ग्राम जतबा में नउचे ताको में मास रो वैल्यू कहूचे डिस्टेंस को में मास सहित कंपेयर करि पानी सेम फिजिकल क्वांटिटी सहित कंपेयर करिबा ओके जदि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी सहित कंपेयर करछे देन दैट इज कॉल्ड ए मेजरमेंट ओके कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ अनदर होमोजेनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज हाउ मेनी टाइम्स the given standard is contained or repeated in the given physical quantity is called measurement understand आउ नेबी की एग्जांपल मौसा 1 kg equal to 1000 ग्राम सो एबे का आसीबा कोन ना मेजरमेंट पय हम कोन दरकार एठी तमे जानि पारुथबो मेजरमेंट पय कोन दरकार माउसी मेजरमेंट पय कोन दरकार मेजरमेंट पय तले मोर कोन दरकार आसुची तले मेजरमेंट पय मोर मेनली टू थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट we need two things what are the two things first thing the unit of measurement if unit is not given then we cannot convert जदि किलोमीटर न दे थांती तुम से मीटर को कन्वर्ट कर पारथांत कि ओके जदि केजी न दे थांती ताको तुम ग्राम को कन्वर्ट कर पारथांत कि सो फर्स्ट थिंग द यूनिट मस्ट बी गिवन सो कौन आमर दीटा नीड दरकार यूनिट सपोज ताको नहीं गली यू यूनिट है आमर यू सेकेंड थिंग्स होची जे नंबर ऑफ टाइम्स इट कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर ओके नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू द न्यूमेरिकल वैल्यू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू number of numerical value here for measurement of physical quantity I add here for measurement of physical quantity we need two things the unit and the number of numeric value okay that is n numeric value को कौन नहीं गली n नहीं गली केते थोड़ा रिपीट अछि से numeric value टा so जदि हम physical quantity को नहीं गली x ओके ताले फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करिबा पई ताले एटी डेफिनेट फार्मूला कोन लिखि परिबे मौसा फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू यूनिट नंबर न्यूमेरिक वैल्यू को है सिंपली राइट नंबर इनटू यूनिट ओके न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट I take physical quantity as x. So x equal to nu. X equal to nu. If I take x as 1 kilometer, then n is 1000. U is the unit that is meter.
ओके सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर ओके सो नाउ बुझीला ना बुझीलानी आउ एग्जांपल देबी एबे मते कह बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ओके एबे गोटे कॉन्सेप्ट नबा जो कि आम कहे न्यूमेरिक वैल्यूटा जब आम स्मॉल यूनिट आड़ को जीवा जब आम स्मॉल यूनिट आड़ को जीवा तो लार्ज बी द न्यूमेरिक वैल्यू ओके पॉइंट टू बी मार्क इफ स्मॉल इज द यूनिट if small is the unit okay then large the numeric value larger be the numeric value larger be the numeric value point if smaller is the unit larger is the numeric value what does it means it means if I consider kilometer to meter and meter to conversion of centimeter ओके ताल जते हम लोअर यूनिट की जीवा जते लोअर यूनिट जीवा एन लो वैल्यूटा हमर कोन हबो ना ग्रेजुअली बढ़ी जीवो ओके मनकर हम कहूचे 1 किलोमीटर ओके किलोमीटर हमर हला लार्जर यूनिट गोटे ताको टिके स्मॉल यूनिट की नेबी जेटा हमर हला 1000 मीटर ओके न्यूमेरिक वैल्यू ये केते अछि 1000 किलोमीटर स्मॉलर यूनिट किए मीटर जिते स्मॉल आसीबो एन लो वैल्यू सेते कोन आसीबो ना लार्ज आसीबो जदि म सेठी सेंटीमीटर को जीबी तन लिखिबी केते 10000 मीटर सॉरी 1 लाख मीटर 1 लाख सेंटीमीटर ओके 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जब आम टाइप कन्वर्ट करवा तेल एठी थिला मोर ऑर्डर 10 टू दी पावर 3 एठी हो गला केते 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर ओके सो एठी 10 टू दी पावर 3 एन लो वैल्यू 10 टू दी पावर 3 बेले एठी एन लो वैल्यू आसला 10 टू दी पावर 5 बिकॉज ऑफ द स्मॉलर यूनिट ओके सो व्हेन यूनिट इज स्मॉल देन लार्जर द न्यूमेरिक वैल्यू प्रूव करवा केमिति सपोज आम गोटे फिजिकल क्वांटिटी एक्स रो डिफरेंट यूनिट को नेबी मन कर मोर एटा हला n1 एटा हला u1 ओके एटा हला n2 एटा को नै जिबी केते u2 ओके टू डिफरेंट यूनिट्स n1 u1 n2 u2 ओके तले n1 u1 n2 u2 जते मेजर करूचे सपोज एटा कहार वैल्यू मैं एटा लिखिबी 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 मीटर मीन्स n1 u1 से 1 किलोमीटर को भी लिखिबी केते ना 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर ता माने n2 u2 दीटा जाक कहार वैल्यू 1 किलोमीटर वैल्यू 1 किलोमीटर वैल्यू ता माने एटा कन्सिडरेशन लेठी लिखि पारिबी फिजिकल क्वांटिटी के जदी नै जाउची x जदी से 1 किलोमीटर टा को नै गले मु x तो x इक्वल टू केते पाइले n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 तुम ये टाइप जिते स्मॉलर यूनिट के जीव सेंटीमीटर तुम डेसीमीटर जाओ ओके मिलीमीटर जाओ नानोमीटर जाओ जिते लोअर यूनिट की जीव से अनुसार मोर वैल्यू गुड़ाक सेमती कौन हो चलो ना चेंज हो चलो ओके सो x इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 n1 u1 से 1 किलोमीटर लिखले n2 u2 10 टू द पावर 5 ओके तो माने x इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ओके जेहेतु समान आसुची सबुरे सेटा हमें कहि परिबा कोन ना गोटे कांस्टेंट सहित रिलेट करि परिबा ओके तमाने हम लिखि परिबा n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 दैट इक्वल्स टू ए कांस्टेंट सब गुडा के इक्वल हो जाउची जेतु इक्वल हो जाउची ताको हम कहा सहित ट्रीट करि परिबा ना कांस्टेंट सहित ट्रीट करि परिबा ता माने मु जनरल लिखि परिबी इन जनरल n u equals to constant okay so that implies to u n equal to constant divided by u ओके जेहेतु कांस्टेंट अच्छी मु लिखि परिबी n प्रोपोर्शनल टू केते 1 by u n प्रोपोर्शनल प्रतिनुमानुपाती रिलेशन जेहेतु प्रतिनुमानुपाती रहुची जते मोर u रो वैल्यू स्मॉल हबो n लो वैल्यू लार्ज हबो
ओके यू जेते कमिबो एन सेते बढ़िबो यू जेते बढ़िबो एन सेते कमिबो जब हम उल्टा आसीबा 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर हो जो आम मीटर रु किलोमीटर को आसिले 1000 टा कन्वर्ट हो गला 1 को तमें जिते लार्जर यूनिट को जीव सेते मोर न्यूमेरिक वैल्यूटा कमिबो स्मॉलर यूनिट को जीवी न्यूमेरिक वैल्यू सेते बढ़िबो बुझीला ना बुझीलानी ओके सो दिस इज मेजरमेंट ओके सो नाउ लेट्स टेक concept of mass ओके देन आम जीवा तापरे मोड ऑफ मेजरमेंट को डिफरेंट मोड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स ओके बुझीला आम देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्वांटिटी जेटा आम कहे कॉन्सेप्ट ऑफ मास कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ओके जो आम कॉन्सेप्ट ऑफ मास कहूचे जो मास कहूचे व्हाट इज मास आम कहे मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in it quantity of matter contained in it okay so mass of a body is quantity of the matter contained in it or contained in the body ओके तो मैंने क्वांटिटी ऑफ मैटर माने कौन बुझीबा मौसा जितेबाला आम कहूचे क्वांटिटी ऑफ मैटर से आम कहूचे गोटे मैटर माने हेटी आटम आसला गोटे मास बा गोटे सब्सटेंस भितर कौन अरेंजमेंट अच्छी अणु परमाणु पढ़ीच जदि अणु परमाणु पढ़ुचे ताने आम जिते अणु परमाणु अधिक नबा गोटे सब्सटेंस रे जदि डस्टर गोटे नेबी डस्टर मास जेतिके आसीबो जदि गोटे बड़ बॉक्स गोटे नेबी ओके पूरा सॉलिड बॉक्स गोटे नेबी तार मासटा कौन आसीबो अधिक आसीबो ना कम आसीबो कहीं कम आसीबो बा कहीं एठी गोटे नबा ए डस्टर रे जेतिके मोर मास आसीबो ए डस्टर रे कौन सेतिके मास आसीबो कि कहीं आसीबोनी ना एठी मोर क्वांटिटी ऑफ मैटर कम अच्छी एठी क्वांटिटी ऑफ मैटर लार्ज अच्छी अधिक अच्छी एटी क्वांटिटी ऑफ मैटर एटी एटम्स मॉलिक्यूल स्मॉल अच्छी एटी एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल गुड़ाक लार्ज अच्छी जो मोर क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़िबो ताले मास भी बढ़िबो ओके सो कहा ऊपर डिपेंड करूचे मासटा कहा ऊपर डिपेंड करूचे ना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी केते मैटर से कंसीडर करिछि बा केते मैटर से कंटेंट करिछि सो मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी understand second देखो what are the different characteristics of mass okay characteristics of mass okay so first characteristics of mass is mass टा कहा ऊपर डिपेंड करूछ रे कलिए क्वांटिटी ऑफ मैटर ऊपर ओके जेतो मास टा क्वांटिटी ऑफ मैटर ऊपर डिपेंड करूछि ताले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बा फर्स्ट प्रॉपर्टी ता लिखि परिबा मास डिपेंड्स अपॉन mass depends upon quantity of matter contained in the body ओके सेकेंड रे कौन कहिबा माउसी सेकेंड रे कहिबा कौन ना जेतला मास आमे नउचे गोटे क्वांटिटी रो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ओके मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ता माने कर गोटे घर पाखे तुम देखि माँ हरिका अट्टा दलती अट्टा देखि ओके जो अट्टा दलती रुटी करने ओके सेटा कौन थाए ना बहुत नरम थाए बहुत सॉफ्ट थाए तुम ताकू कौन कर छोटा गोलाटे को लेकिन तुम पूरा फ्लाट कर दे पार फ्लाट करदे कौन ता मास चेंज हो कि रे
मास चेंज हेनी ताको मुझे गोटे स्क्वायर टाइप कर दे पारि स्क्वायर टाइप करदे तो मास चेंज है कि चेंज है ओके ताकू नहीं कि गोटे सिलिंडर कर दो ताकू एमती रोल करके गोटे सिलिंडर कर मास चेंज है कि है ना जदि मास चेंज है तार मासटा तार सेप उपर डिपेंड करला कि साइज उपर डिपेंड करला कि स्टेट उपर देखा स्टेट कौन आम कहे मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज जदि ताकू गोल करके रखुची सेतिकी सब्सटेंस सेतिकी मैटर चेंज हो गले मास चेंज हो जदि सेम मैटर ऑफ सब्सटेंस को सर्कल करली सही सेम मैटर ऑफ सब्सटेंस को स्क्वायर करदेली सही सेम ऑफ सब्सटेंस को सिलिंडर करदेली इन ईच केस मास इज कांस्टेंट if mass is constant means mass is independent of shape and size so second property कौन आसुची ना mass is independent of shape and size ओके शेप एंड लिखा शेप साइज आउ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा स्टेट ओके जो आम रेस्ट कौचे बॉडीटा मोर कौन अच्छी एठी रेस्ट अच्छी ओके जदि बॉडीटा रेस्ट अच्छी यार मास जी या मूव करेबी मूव कर मास कौन चेंज हो कि चेंज हेबो नाही तब स्टेट उपर भी ये डिपेंड करूनी रेस्ट रे जति मास अच्छी मूव कले भी सेतिकी मास आसीबो जदि मूव कले मोर सेतिकी मास आसुची ताहले कौन हैला ना ता मासटा भी तार स्टेट उपर डिपेंड करूनी सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड स्टेट मीन्स आम कहि परिबा रेस्ट एंड मोशन देखा जाउची रे तोळे देखिबा ओके देखा जाउची मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड स्टेट रेस्ट एंड मोशन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आम कौन कहबा जदि गोटे डस्टर पाखरे ये मनकर डस्टर रखी यार मास है M1 एवं कौन करी ता पाखे गोटे चौक रखीदेवी मनकर तार मास है M2 एवं मत कोई डस्टर पर ये चौक मास चेंज हम कि डस्टर पर ये चौक मास चेंज हम कि ना चौक पर ये डस्टर मास चेंज हम कि ओके दीटा केस नवा चौक पर डस्टर मास चेंज डस्टर पर चौक मास चेंज ओके जदि दुटा बॉडी को हम पाखापाखि रखिले बा दूरे की रखिले एमान को मास किसी एफेक्ट हम कि किसी मास एफेक्ट हेनी जदि मास एफेक्ट करूनी सो प्रेजेंस ऑफ एनदर बॉडी कैन नॉट एफेक्ट और कैन नॉट चेंज मास ऑफ ए बॉडी जब गोटे बॉडी पाखे आम आउ गोटे बॉडी की रखुचे ताहले सेठी मास रो किसी चेंजेस आसीबनी सो प्रेजेंस ऑफ एनदर बॉडी डू नॉट चेंज 3 नंबर पॉइंट लिखा मास ऑफ ए बॉडी डू नॉट चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनदर बॉडी mass of a body do not change due to presence of another body okay fourth point कहबा mass of a body cannot be zero जदि आम कौन से मास बा कौन से बॉडी आम कंसीडर करूचे तल से बॉडी केस मासटा केबे जीरो हम ना फोर्थ प्रॉपर्टी आम कहीपर ये टाइप रे मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो सो कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिले कैरेक्टरिस्टिक्स आसला मास डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर केते अमाउंट ऑफ मैटर से कंटेन करी डिपेंड करे सेकेंड कहे मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज मास कहा उपर डिपेंड करेनी शेप उपर डिपेंड करेनी कि साइज उपर भी डिपेंड करे नाही मास कहा उपर डिपेंड करूनी मास डज नॉट चेंज विथ change of or does not change due to the presence of another body okay mass does not change or does not depends upon state rest and motion rest नियो बा motion नियो mass टा कोन रहिबो constant रहिबो okay mass of a body cannot be zero okay so these are the different properties of mass okay so now the mass is divided into two categories
ओके आम मास को आम दीटा पार्ट रे डिवाइड करूचे मास को आम दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दउचे गोटे है मोर इनर्शियल मास गोटे है इनर्शियल मास आ गोटे है ग्रेविटेशनल मास गोटे है मोर इनर्शियल मास आ गोटे है ग्रेविटेशनल मास ओके इनर्शियल मास कौन आसिला इनर्शियल मास आसुची इफ आई कंसीडर द क्वांटिटी inertial mass that is a measure of inertia of a body measure of the mass or measure of inertia of a body measure of inertia of a body okay measure of inertia of a body okay that is a quantitative measure of inertia of a body inertia माने कौन जड़त्व okay जदि गोटे बॉडी को आम रेस्ट बा मोशन करेबा से स्टेट केस रे ओके जड़त्व माने कौन जो स्टेट रे थिबो से स्टेट रे रहिबो ओके जो स्टेट रे थिबो से स्टेट जदि रेस्ट अछि रेस्ट रहिबो मोशन रे अछि मोशन रे रहिबो ओके सो सेही केस रे तार क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कौन ना सेही थिरे तार जो मास टा अछि ओके से मास टा तार इनर्शियल मास मनकर रेस्ट रखी बॉडीटा ये जो मासटा मोर आसला दैट इज इनर्शियल मास ये चेंज आसुनी ओके जदि चेंज आसुनी ताले मोर कौन आसला इनर्शियल मास या मोशन करेबी जदि स्टेट कंटिन्यू इनर्शिया माने कौन जड़त्व जो स्टेट रे अछि से स्टेटा को से कंटिन्यू करबा को कहा जाए इनर्शिया ओके जदि मोर एठी रेस्ट अछि त माने मोर मास कांस्टेंट आसला जदि मोशन करूची तमन सेटा को हमें कहबा दैट इज ए इनर्शियल मास सो दैट इज इनर्शिया मास मीन्स दैट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ओके व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल मास मीन्स इट्स प्रॉपर्टी टू मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स ए प्रॉपर्टी टू measure gravitational force it is a property to measure gravitational force of attraction okay gravitational force of attraction of earth okay so it's a property of measure gravitational force of attraction on any body earth on any body okay so it's a property to measure gravitational force of attraction of earth on any body जेतेबेले गोटे बॉडी को आम ग्रेविटेशनल मास केतेबेले कहबा माने गोटे बॉडी को आम न्यूटन्स थ्योरी रे देखिचे बा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रे गोटे बॉडी को जदि मुझे छाड़ी देबी एठी रेस्ट अछि या छाड़ी दियो से कौन है तौल को आसूची बट जिते से ये कौन पाई तौल को आसला ना बिकज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जेहेतु ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छी तमें से ऑब्जेक्टा कौन आसूची ना तौल को आसूची तमें ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करुच्ची किए अर्थ करुच्ची कौ फोर्स रे ग्रेविटेशनल फोर्स रे यही ऑब्जेक्ट जो मास रहा वर्तमान मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास ये ऑब्जेक्ट रे बॉडी जो मास अच्छी दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल बिकज इट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ ओके ये अर्थ को कौन अट्रैक्ट करदेला कि ना ये तुम छाड़देल तुम एमती कह सारे मोर एटा तो आसबनी अर्थ ऊपर को पलि आसला अरे हम कि हेनी कौन आसब ना बॉडीटा तौल को ही आसला ताने ये एफेक्ट है किए ये स्मॉल बॉडी जो बॉडीटा एफेक्ट होची से बॉडी रो जो मास अच्छी से कहबा ग्रेविटेशनल मास ओके सो दैट इज द प्रॉपर्टी टू मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनी बॉडी ओके दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास ओके इनर्शिया मीन्स आम गोटे बॉडी को रेस्ट रखी देचे ओके
So generally gravitational mass and inertial mass both are equal. Okay, both are equal. Gravitational mass तुम कह क्वेश्चन कर सर यहाँ तो आम रेस्ट रखीचे या ऊपर भी मोर ग्राविटेशनल ये भी रेस्ट अच्छी ताने ये भी गोटे इनर्शियल मास. ओके, या ऊपर ग्राविटेशनल फोर्स भी पड़ू ये भी रेस्ट अच्छी. ओके, यहाँ गोटे इनर्शियल मास कहीपर यहाँ भी गोटे ग्राविटेशनल मास कहीपर. ओके, सो इन कॉन्सेप्ट इनर्शियल मास एंड ग्राविटेशनल मास आर इक्वल. ओके, so this is all about today's class. Okay, so in next class we discuss about the concept of length, concept of time and different system of unit for measurement. Okay, system of unit for measurement. Okay, so आज हम कौन पढ़िले गोटे एनालिसिस करनबा कौन पढ़िले ना measurement. Measurement means कौन ना that is the comparison of a physical quantity with the homogeneous same quantity. That means the homogeneous quantity is repeated a number of times in that physical quantity. Okay, as like 1 kilometer equal to moves a 1000 meter 1000 meter times repeated ହେଇची के ना distance कहा भितर 1 kilometer भितर. ओके, अब हमें सेकंड मेजर कले स्मॉलर द यूनिट लार्जर बी द न्यूमेरिक वैल्यू लार्जर बी द यूनिट स्मॉलर बी द न्यूमेरिक वैल्यू. तुम जिते स्मॉल यूनिट कम नब जिते स्मॉल यूनिट कर एन वैल्यू से लार्ज आसब. एक्स इक्वल टू एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, थर्ड आम कहले मास. कॉन्सेप्ट ऑफ मास इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ए बॉडी एंड mass depends upon the quantity of substance contained in it. Mass does not depends upon shape, size and state. Mass does not depends upon presence of another body and mass cannot be zero. Mass is two type, inertial and gravitational. Inertia is the state of a body and gravitational is the force of attraction by earth on a body. That is all about. Okay.